Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 700, Advanced Project Management within your MSPM course. This is another lecture, another knowledge area. We've covered several in the past. Today would be the project cost management. We will try to cover the project cost management in its entirety in today's lecture. And the reason is that there is another class, another elective for you, which is the project constraint management. And project constraint management will deal with three things: project scope management, project cost management, and then the project time management. ये जो तीनों हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. कंस्ट्रेंट वर्ड गलत है, एसेट्स भी कह सकते हैं, मगर ये जो रीजंस हैं ये बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस देती हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि बेस्ड ऑन दैट वो अपनी सक्सेस या नॉन सक्सेस को डिटरमिन कर सके. प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया है, अगेन प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट की क्लास में बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाएगा. और मगर फॉर पर्पस ऑफ this particular class, since we are covering all of the knowledge areas, we will also cover this particular knowledge area. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का, वो भी हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में करके और वी मूव ऑन and give a little bit more detail and emphasis on other knowledge areas. Project cost management, जिस तरह से बाकी knowledge area की importance है, इसकी भी बहुत importance है. Project cost management is considered one of the triple constraints of a project, जो project की boundary set करता है. Cost को manage करना, customer को status report देना, और based on that information अपनी progress को determine करना are all important aspects that a project manager has to deal with. Reference study material, PMBOK का ये जो 4th edition का chapter है, वो chapter 7 है, for the benefit of people who are actually following our lectures along with the PMBOK guide. Study notes की बहुत importance है. ये जो आपको प्रेजेंटेशन मटेरियल दिया जा रहा है, वो समझें कि दरिया को कूजे में बंद करके दे रहे हैं. ऑल रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर एटलीस्ट हाईलाइटेड फॉर योर इंटरेस्ट एंड इंफॉर्मेशन. उससे अगर आप बढ़ के इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो रेलेवेंट रेफरेंस मटेरियल में डॉक्टर कर्जनर की किताब है, उसमें चैप्टर 14 एंड 15 गोज इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल. और ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा अगर आप चाहें तो किताबों से मार्केट भरे हुए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की. हर जो नॉलेज एरिया है, इट कुड बी एंड इज अ 16 वीक अ होल सेमेस्टर कोर्स. दैट मीन्स हम इतने डिटेल में किसी भी नॉलेज एरिया को लेके जा सकते हैं कि एक सेमेस्टर क्या पूरी 2-2, 3-3 सेमेस्टर्स भी उनके डिटेल्स को पढ़ाते रहें तो भी कई दफ़ा टाइम कम हो जाता है. अगर हम केस स्टडीज़, रेफरेंस मटेरियल, एग्जाम्पल्स पे चले जाएं, फिर उसको लैब्स में लेके चले जाएं जहां हम कॉस्ट एस्टिमेशन पे चले जाएं, तो अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स इज ओनली गिविंग यू इंफॉर्मेशन इन अ नटशेल. एक और किताब जो अब तक आपने नहीं देखी है, इट्स अ क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर. इसमें पेज 54 से 63 है फॉर सम ऑफ द फॉर्मूलाज. अगर आप PMI का एग्जाम देना चाहते हैं तो यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज गिवन टू यू. हाउएवर, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लास एंड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग वेल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, स्टडी मटेरियल जो आपको दिए गए हैं, स्टडी नोट्स जो आपको दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन मटेरियल, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर योर नीड. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स मूव ऑन टू what we have under project cost management. Project parameters, cost. All projects necessarily incur a cost because they consume resources. Resources जहाँ use हो रहे हैं वहाँ cost हो रहा है. आपके बेल कर्व में जो टॉप लेवल था, जहाँ पे बेल कर्व अप हो रहा था, वहाँ पे कॉस्ट सबसे ज़्यादा इसलिए थी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिसोर्स की यूजेज भी उसी
एग्जीक्यूशन फेज में हो रही होती है। There can be a multitude of cost items which are incurred on projects, some which are regular, others are periodic, and others are non-recurring. That is, which are incurred usually once in the course of the project life cycle in nature. इसके बारे में हम बात करेंगे। Estimating the cost of a complex project with a high degree of accuracy can be quite difficult in its early stages due to a paucity of information. Early stages में हम cost estimate क्यों नहीं अच्छा कर सकते? Obviously, जो reason अब हमारे सबके दिमागों में very clear होना चाहिए is because एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, एक तो और दूसरी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे लिए काम करें टू ब्रिंग अप प्रोटोटाइप्स और मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द रियल incurred cost value. Project management offers several methods for estimating a project's cost. However, cost overruns are common on projects and are considered a manifestation of project failure. We do understand कि upfront हम cost estimation नहीं कर सकते हैं and the reason is कि हमारे पास resources की कमी होती है. As we move on, more we find out about the project. वही वाली बात है, stated need customer की कुछ और होती है and more we get to work with the customer, उनके implied needs का हमको पता चलना शुरू हो जाता है और जब implied needs का पता चलना शुरू हो जाता है तो cost भी बढ़ना शुरू हो जाती है. But the important thing for us to realize as project managers is that cost तो है, हम किस तरह से cost estimates को कर रहे हैं और making sure that the customers understand that the price can go up or the project cost can go up. We should be in a position to give them a certain percentage ताकि जब cost बढ़े तो the customers will feel comfortable because either we did not spend or the customer did not want us to spend enough time in planning, or the customer didn't want to give us all the information up front, or there were changes that came into effect, चाहे वो smaller changes थे या scope creep थी, but the customer will sign up for that. तो ये सारे circumstances होंगे, होते हैं और होते रहे हैं, इसीलिए customer should also realize कि project cost बढ़ सकती है. यूजुअली बहुत कम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो जाए, ज़्यादातर बढ़ने के सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट पैरामीटर कॉस्ट में हम लोग आपको दो ग्रुप ऑफ एग्जांपल्स देना चाहते हैं. देयर आर नॉन रिकरिंग एंड देन देयर आर यूजुअली द रेगुलरली रिकरिंग एग्जांपल्स. द नॉन रिकरिंग एग्जांपल्स आर लैंड एक्विजिशन, Establishment of project and furnishing of a site office. ठीक है, ये जो पहली दफ़ा के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमको हेड ऑफिस बनाना है या हमको लैंड खरीदना है, वो वन टाइम कॉस्ट है. Establishing of a project and furnishing the site office, छोटे मोटे जो भी फर्नीचर वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट नीड्स लाने हैं वो भी वन टाइम कॉस्ट है. Recruitment, selection and training of key project staff. Procurement of hardware, software and other technical equipment for the project. Consultancy, हो सकता है bringing in subject matter expert, just identifying, writing scope statement के लिए अगर हम किसी third party को लेके आना चाहते हैं. A certain special project audit, not a regularly occurring project audit, मगर at a certain point in time. For buying licenses, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइसेंस लेना है. And permits from official concerned, ये जो सारे हैं ये यूजुअली वन टाइम कॉस्ट होती है फॉर एनी प्रोजेक्ट. ज़रूरी नहीं है कि सारे यूज़ हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी हो हमारे प्रोजेक्ट के लिए. Obviously it depends on the size and the complexity of the project. So these are the non-recurring. अच्छा, अब रेगुलरली रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? नंबर 1, सैलरीज ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ. हमको जब चेक मिल रहा होता है हमको लगता है बहुत दिनों के बाद चेक मिलता है, मगर जो चेक दे रहा होता है
उसको ये लगता है कि महीना गुजरते पता ही नहीं चलता है, अभी काम तो कुछ हुआ नहीं, पेचेक का दूसरी पेचेक का टाइम आ गया। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, दीज आर वेरी कॉमन अमंग पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग देयर पर्सनल। फिर रेंट, अगर आपने वन टाइम एक्विजिशन नहीं की है तो फिर रेंट फॉर योर प्रोजेक्ट फैसिलिटीज, ये भी रेगुलरली रिकरिंग कॉस्ट होती है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, जो भी होते हैं फॉर द 6 month प्रोजेक्ट, वो रेगुलरली रिकरिंग कॉस्ट है। फिर ट्रैवलिंग एंड मीटिंग्स, मीटिंग्स में चाय देना, ये जो है आपको पता है कि हर महीने आपकी स्पॉन्सर मीटिंग हो रही है, उसमें अगर आप खाना देते हैं या स्नैक्स देते हैं या चाय देते हैं तो यू कैन एक्चुअली सेट अप दैट कॉस्ट और आपके वर्क प्लान में ये भी लाइन आइटम ऐड हो सकता है। प्रोजेक्ट इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल बीइंग सप्लाइड ऑन रेगुलर बेसिस। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिसलेनियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, अगर कोई पेटी कैश आप सेटअप करते हैं, अगर आपका सर्वे या क्वेश्चनियर का है कि हर 3 महीने के बाद कोई सर्वे होना है एंड यू हैव टू ब्रिंग इन people who would do this, या people who would go from door to door getting input from the end users or the affectees, ये जो है you can actually identify these line items as cost, as regularly recurring cost to the project. Another important or some of the important topics in project cost management: categorization of project cost items, top down project cost estimation method, हम बात करेंगे उसके बारे में, bottom up project cost estimation method, फिर deterministic or probabilistic project cost forecasting, project cost baseline, synchronization of payments due with release of funds, and then the earned value method. Some of these topics will be very clear in your head by the end of the lecture. If they are not, this would be the time to go out, do your research, do your searches, read up on reference material and understand each one of them. अगर हम PMBOK के एरिया पे फोकस करें और देखें कि वो what do they have to say about the definitions. Project cost management includes the processes which are required to not only plan but manage and control cost so that the project can be completed within the allocated budget. So whatever the customer has provided to you and has agreed upon it, you create that baseline. Baseline is image or set in stone kind of a target that you're always trying to meet or do better on. Processes that are covered under the project cost management are only 3 this time. सबसे पहले cost estimating, how long do you or how much do you think your project will incur or how much money it will use. Estimating के बाद word आता है budgeting. जब आपने estimate कर लिया, फिर there are certain things that you need to do to change the word estimate to the word budget. इसके भी certain steps हैं, और taking the word budget, getting the right input, focusing on those values and those numbers, getting third party consultations, using the word responsibility and accountability of your resources, of your man resources or girl resources, human resources, and then once the estimate has become a budget, trying to control your cost. That means you're now trying to meet or exceed that target, and exceeding that target, that means that you are under budget. You're able to do the work by using less of the cost. Project cost management includes the processes required to ensure that the project is completed within the approved budget. Life cycle costing. Life cycle costing यानी शुरू से आखिर तक for your project. Include cost for R&D,
research and development, production, execution के, construction, operation and maintenance, and then the product retirement and phase out. Life cycle costing is not just for development of the product or the project service, but it is the whole life cycle. ये जो 3 processes की हमने बात की थी, estimation, budget and then controlling, like the words say, planning phase में हम estimate करते हैं, planning ही phase में हम audits कराते हैं, estimates को subject matter experts के हाथों से गुजारने की कोशिश करते हैं. We contact the financial consultants, people who have done similar projects. We work with them. People who have done similar activities, get their input. And finally, look and relook and then relook to confirm that the estimate is really the budget. और budget estimate को budget बनाने में हो सकता है कि we look into different things like administrative cost of the project, sponsor meetings में जो पैसे खर्च होते हैं, we add up all the regularly recurring cost and then we also add the one time cost. वो सारे add करके we also add in things like disaster recovery plans. अगर इस तरह से नहीं होता तो we would have to save our, अगर कोई IT का project आप कर रहे हैं and the data that you are developing needs to be backed up and sent to some other site, हो सकता है कि आपका area जो है security concern area में आता है जहाँ आप project कर रहे हैं. To safeguard the data, every week you back up the data, you burn CDs and you send them via courier service, or you take a person who will take the data and fly down to maybe Karachi or Lahore and keep that in another location. ये जो movement है for data recovery and data backup, ये भी एक cost है and that line item will get added. ये भी एक cost है. तो estimate में हमने backup का नहीं लिखा था, but now in budget, because you have looked and relooked, you're going to add up that line item. फिर अगर कोई safeguard money आप चाहते हैं, कोई management constraint है या कोई contingency reserve है या management reserve है, इस तरह का कोई अगर reserve money है, but 2% or 5% of the cost of your project, then that line item also gets added to the budget. It was not part of the estimate, but now it is part of the budget. So, estimate को budget बनाने में हम लोग अभी और बात भी करेंगे, मगर ये चीज़ें होती हैं. All done in the planning phase. No work has started yet, but you're only using your brainstorming techniques, working and talking with others to understand what will be the final cost to do this project, to execute this project. In certain situations, if you realize that the budget is now becoming so high, and when you take it to the customer is in total disagreement, that will be a good time to call off the project also. You started with a 10 million rupee project, and now when you're looking at the details in the planning, no work has started, remember, but during the planning phase you are looking at different aspects, and now it's almost a 30 million rupees project. The customer, if they agree to it, if you can convince them that and you can show them the various activities that are going on and can do a certain kind of a breakdown for them, if they agree, that then you will move on to the execution phase. If they are in total disagreement, then you have no other option but to call off the project. If the project customer and the sponsors are all in agreement, then based on the budget that was in the planning phase, during the execution phase, when you're actually incurring more cost because of adding raw resources, you start controlling
and that obviously will happen in the monitoring and the control phase of the project. सबसे पहले की बात करते हैं estimating. Estimating cost. It involves developing an approximation or an estimate of the cost of the resources needed to complete your project activities. The word approximation, on top of my head or based on the similar activities that I have done, this is how much do I think it will take. Sometimes the customer comes in with saying it's a 10 million because of the work that I've done or because of the experts of our office. This is how much it will take to do this project. And that becomes your baseline that you start working. Don't confuse yourself with the word because I'm using the word baseline, but that will be your initial cost. And you start working your way through that cost. Estimate में 3 तरह के cost estimating techniques हम use कर सकते हैं. And each one of them have their own terminology. सबसे पहला जो है वो है analogous. Analogous estimating is also called top-down and budget estimating. Uses actual cost of a previous or a similar project. हमने कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट किया था पिछले साल, इतनी कॉस्ट आई थी वो. Analogous का word similar. Similar kind of projects that we have performed, उस पे ये कॉस्ट आई थी. Now you may or may not be thinking of inflation. You may or may not be thinking of the import charges that have now gotten increased, or कोई import duties अब लग गई हैं, या foreign exchange, if it was 75 rupees before, now it is 100 rupees for a dollar or whatever. If you're using euros or Japanese yen, you may or may not be thinking of some of those circumstances. So analogous estimating is, I've done similar kind of work, top down at a very, very high level. This is how much I think your project will cost. फिर एक होता है parametric modeling. Uses project characteristics in a mathematical model to predict your project cost. It is also called rough order of magnitude, ROM, rough order of magnitude. Highlight these words because ये बहुत commonly use होते हैं project management में. It is scalable. सबसे जो simple सा example ये है कि अगर आप construction में काम कर रहे हैं और आपने अब तक 5 मरले का 2 बेडरूम का घर बनाया है, अब कोई आया है और वो आपको कह रहा है कि मुझे 10 बेडरूम का 2 कनाल का घर चाहिए. What will you do? अगर आपने 2 बेडरूम का घर 10 लाख में बनाया है तो 20 बेडरूम का 1 करोड़ में बनेगा. ठीक, इट्स जस्ट और या जो भी टेक्निक यूज करते हैं आप, मगर 1 कनाल का घर 1 करोड़ का है तो 10 कनाल का घर 10 करोड़ का होगा. यानी कि आप सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और उसको स्केल कर रहे हैं. आज मैंने 5 बेडरूम का हॉस्पिटल बनाया है, कल अगर मैं 50 बेडरूम का या 50 रूम का हॉस्पिटल बनाऊंगा तो इट विल बी 10 times the cost. That is called parametric modeling. It is also called the rough order of magnitude. जो सबसे अच्छा तरीका है ना, और they all agree to it, is the bottom up estimating. Estimating the cost of individual work item. Summarizing or rolling up the individual estimates to get a project total. It is also known as definitive estimating. The word definitive means, अगर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को याद करें इस वक्त, तो हमने प्रोजेक्ट के स्कोप को देखा, हमने with our minimum resources that are available
to me as a project manager and my organization. I'm going to list out all the activities that will be needed to do this project to the best of my understanding at this point in time. I am going to take the effort to estimate each line item. अगर 100 line items हैं इस वक्त, तो मैं 100 line items पे गुजर के I'm going to estimate how much will it cost me to do each of those activities. जब हम उस सारे एक्टिविटीज को एड अप करेंगे तो हमारे पास एक सम आ जाएगा. That will be how much will it cost me to do this project. उसके बाद फिर मैं उसमें 2-4 और चीजें ऐड कर देती हूँ जिसकी मैंने बात की है पहले. मैनेजमेंट रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, डिजास्टर रिकवरी में डेटा बैकअप रिजर्व, इस तरह की चीजें 2-4 और ऐड कर दी. फिर भी this is the best way of estimating any project, but we are still using the word estimating. So 3 तरीकों से आप दे सकते हैं: analogous, parametric या bottom up estimating. एक चीज भी बड़ी ऑब्वियस है, जितना शक्कर डालोगे चाय उतनी ही मीठी होगी. रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है उस पे पैरामेट्रिक मॉडलिंग है, उस पे हमने बहुत कम टाइम खर्च किया. हमने देखा कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट किया था, हाँ ऐसे हो सकता है. हमने उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं स्पेंड की कि ये एक हॉस्पिटल था वो हमने इस्लामाबाद रीजन में बनाया है और अब जो हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं वो हम पहाड़ियों के ऊपर बनाने जा रहे हैं और हमको पहाड़ों के अपने हॉस्पिटल पहुंचने के लिए भी एक रास्ता बनाना होगा, सामान ले जाने के लिए भी रास्ता बनाना होगा. वहाँ पे वो स्किल सेट भी नहीं अवेलेबल है जो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएगा. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी हमको वहाँ अकोमोडेशन का इंतज़ाम करना पड़ेगा. हमने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं और जाहिर बात है हमने सिर्फ स्केलेबल करके एस्टिमेट दे दिया. रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की जो एस्टिमेटिंग रेंज है वो +75% टू -25% होती है. माइनस क्यों? इसलिए कि चाहे आप 2 कमरों का घर बनाएं या 20 कमरों का घर बनाएं, कई चीज़ें आपकी कट डाउन हो जाती हैं. हर नया घर बनाने के बजाय वो बेसमेंट तो वही डिग करना पड़ेगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो मगर वर्कर्स वर ऑन साइट. सो ऐसा भी हो सकता है कि 2 कमरे और 20 कमरों के घर में 10 टाइम्स का वो नहीं होगा, थोड़ा सा कम कॉस्ट आ सकती है. मगर उसमें ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो सिर्फ 10 टाइम्स नहीं, वो 18 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है कॉस्ट, बिकॉज ऑफ सर्टन अदर रिस्क फैक्टर्स और सर्टन अदर सिचुएशंस दैट कैन हैपन. Rough order of magnitude estimating range is +75%, that it can almost double up, or -25%. Intermediate budget +25% to -10%. और definitive bottom up estimating जिसमें हमने बहुत टाइम स्पेंड किया. Yes, it can go up from moving from estimation to budget, but the movement can or should kind of fall into the range of +10% to -5%. The rules of estimating. Use the approach most appropriate for the project. हर project एक unique. What's the definition of a project? It's a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है मगर उसमें कई सिमिलैरिटीज भी होती हैं. सो व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग कॉस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट, you have to use the approach which is most appropriate for that particular project. Communicate the level of accuracy required to the estimating team. Tell them how important it is that you meet the customer's target. और अगर आपको पता चल रहा है, and that is something that you will relate to your estimating team,
कि customer is extremely rigid about the cost and it is a fixed price budget. That means कि जब हम साइन करेंगे, अगर 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पे हम साइन कर रहे हैं, तो अगर 12 करोड़ लगे या 8 करोड़ लगे, we still will only get 10 crores. So it's very important to clearly communicate that to the estimating team, that you have to be very careful in estimating. If we go above the target figure, then that means it's coming out of our own pocket and the project organization will share or suffer the cost. Involve the project team in the estimating process. याद रखें कि ये this we are still in the planning phase, मगर जो भी हमारे पास resources हैं इस वक्त, minimum amount of resources, use all of them. Include your project team in the estimating process. Base estimates on history. अगर आप similar project कर चुके हैं, similar activities कर चुके हैं, तो use that lessons learned, use that information. Another one is use available standards at any point in time. You should have access to similar work that has been done or certain methodologies or certain standards that are applicable to your particular project. Use those as guidelines or as guidance in the road of estimating cost. जो चीज़ हम सारे, we are all as project managers, we are all guilty of doing at certain point in time or in certain projects, are that we make estimates to fit desired cost or a delivery date. And we are saying do not do that. Your organization can agree to do a project even when we incur a little bit of loss because of the criticality of the project. Yeah, ye कि it's a government project and we know we have to do it, or for a lot of different reasons. Do not try to make estimates to fit a desired cost or a delivery date. Validate estimates with the team. Do not pad estimates. एक चीज़ जो हम बहुत करते हैं खुशी खुशी, वो कह देते हैं कि 5% या 10% buffer cost दे देते हैं. We cannot do that. While you're estimating, estimation से budget में जाने के लिए we can actually put in reserves, मगर estimates में we have to be careful about not padding any estimates. जो reality पे काम हो रहा है, we should leave it at that. Based on the best possible targets, put in those cost targets for each activity. Recognize that estimating takes time. Estimating takes a lot of time and lot of effort from your team, from yourself, from consultants, from other people. Learn and understand that it does take time. Make sure an activity exists, time exists for you to fulfill these requirements. और सबसे जो important है वो document your estimating assumptions and constraints. अगर इसमें import होना है या कोई license लेना है, foreign exchange का use करना है या inflation, होता ये कि आज हम देते हैं customer को estimate और customer respond करता है 1 साल के बाद. During that 1 year, things may have changed. Assumptions में you have to be upfront and document what made you got to that particular figure. Because अगर आज 1 करोड़ का है तो 1 साल के बाद वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं होगा, मगर कस्टमर के दिमाग में वो 1 करोड़ का फिगर ही रहेगा. So we need to make sure that those assumptions are documented and shared with the customer, ताकि वो अब वो 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख का हो चुका है प्रोजेक्ट. एस्टिमेट के बाद जब हम बजट में पहुंचते हैं, determination of budget involves allocating the overall cost estimates to individual work items in order to establish a cost baseline
for measuring your project performance. अगर हम definitive budget तक पहुंच जाते हैं, that means we are doing something called bottoms up, listing all the activities, और हर एक्टिविटी पे हम एक एस्टिमेट लेते हैं. इसमें 4 दिन लगेंगे, इसमें 5 दिन लगेंगे, ये 1 हफ्ते का काम है, ये इसमें 2 महीने लगेंगे, and so on so forth. Once we are through on from that particular activity of giving target numbers to each of those activities, we add it all up, and now we should have a cost baseline. Before it moves from estimate to budget, we would have to look and then re-look and verify that are those numbers accurate. Remember, you're not providing buffered information at this point in time. आप reality check करके कर रहे हैं. अगर कोई चीज़ 2 दिन में है तो वो 2 दिन में ही हो रही है. जब एस्टिमेट से बजट में जाते हैं और टोटल एक आपके पास फिगर आ जाता है, उसके बाद आप और चीज़ों का सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनप्लान्ड फॉर हॉलीडेज अगर आ गई, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, अगर नया कोई आता है तो उसको हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, अगर कस्टमर आज एक रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट के बजाय 3 स्टेटस रिपोर्ट महीने में चाहता है, तो 3 स्टेटस रिपोर्ट निकालने के लिए भी टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, पेपर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए. तो वो भी एक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द कंफर्ट लेवल ऑफ द कस्टमर, दैट ऑल लाइन आइटम और कॉस्ट भी ऐड हो जाती है. ये सारी जब हम उसको ऐड अप करते हैं और फिर एक स्नैपशॉट ले लेते हैं, एस्टिमेट से बजट जब बन जाता है, तो first of all, obviously, before we take the baseline or before we take the snapshot, there's a commitment process that me and you and everybody else, project organization, the customer organization, the sponsors, your team members, all are feeling responsible and accountable for meeting and exceeding that target cost. जब आप everybody is in agreement, that cost is going to become the cost baseline. That particular cost will be used as a reference point for comparing planned versus the actual, or comparing and giving variance at any point in time. जो present value है, these are different formulas that we are going to see. $1 today or a rupee today is worth more than $1 or a rupee from a year from now. We all agree to it. इसको हम inflation कहते हैं. आज का या 50 साल पहले जैसे हमारी अम्माएं और हमारी नानी सब बात करते हैं कि 1 रुपए किलो गोश्त मिलता था और आज क्या हो गया है, बात ये है कि दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट. द प्रेजेंट, उस वक्त शायद 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी और आज 100 रुपए की कोई वैल्यू भी नहीं रह गई है. 20 साल के बाद हो सकता है कि 1000 रुपए की भी कोई वैल्यू ना रहे, या हो सकता है 10 साल के बाद भी 1000 रुपए की कोई वैल्यू ना रहे. Unfortunately, मगर this is the world that we are living in. So, what we have today is worth more than the money, the same money that we will have from a year onwards. और ये सिर्फ हम 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है? The reason is that the time value of money, mathematically, इसका भी एक फॉर्मूला है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में यूज किया जाता है. Present value, the value of money today, equal to the future value divided by 1 plus R, the rate of return, over the number of years. So PV, the present value, equals to the future value divided by 1 plus R, whatever the rate of return is,
स्टेट बैंक ने जो भी रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है, या आपने अगर इफ यू आर इन एन agreement with the customer on a certain rate of return, then plug that in and n will be the number of years. So आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कस्टमर आपको एक सिचुएशन में अपफ्रंट पूरे पैसे दे देता है, या आज आपको इन्वेस्टमेंट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और सब्सिक्वेंटली कस्टमर पे करता है, या कस्टमर कहता है कि मैं ये अमाउंट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में दूंगा. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी अप फ्रंट, that money's value will be much more if the customer gives the same value 5 years from today. Again, with that mindset, जब आप agreements में जा रहे होते हैं और cost value निकाल रहे होते हैं, तो you have to be thinking of all those things. Another one is the net present value. It is a sophisticated capital budgeting technique that equates the discounted cash flow against the initial investment. Sophisticated capital budgeting technique that equates the discounted cash flow against the initial investment. Very wordy indeed, magar for the benefit of people who are listening to me today, it's good enough if you know this particular formula, and when practical life में जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो you can use that based on your own judgment at that point in time. ठीक है? So net present value, जो लोग engineers हैं उनको तो ये बात समझ आ रही होगी कि, या जो statistics पढ़ रहे हैं हम इस प्रोग्राम में, but the symbol of summation, T equal the first year to the number of years, where n is the number of years, its future value at the time period divided by 1 plus r being the rate of return, and then t is the time period. All from 1 through the number of years that we are going to use the value, it's minus the initial investment. So the net present value को आप सारे future value, सारे rate of return from 1 through the number of years, 10 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का project है, वो करके, and then you subtract the initial investment. Net present value के बाद internal rate of return. That is the discount rate where the present value of the cash inflow exactly equals to the initial investment. इसमें भी it's a formula 1 through n, पहले साल से लेके number of years, future value for the time period. Now this time it is 1 plus the IRR, which is the internal rate of return, all at the time period, and then you subtract the initial investment. All will be equal to 0. So internal rate of return जो आपको निकालना है, तो it is the discount rate where the present value of the cash inflow exactly equals to the initial investment. जब आप लोग project constraint management पढ़ेंगे तो hopefully you will be dealing with all the formulas, you will be dealing with actually doing questions based on it at this point in time, because we are covering so many and we are just touching upon different areas of project management. Know it, memorize it to the level of only knowing the formulas. Don't try to get into too much details, and I'll tell you the reason why. As project managers, हम लोगों के पास बहुत limited situations होती हैं where we have to think of these things. It's the financial group or the marketing, not the marketing group, it is basically the finance organization or finance department that takes care of these things.
हमारा काम एज प्रोजेक्ट मैनेजर is usually restricted to listing the activities and costing them out. उसके बाद जो next step forward होता है, actually taking those estimates and creating a budget, is usually done by another group of resources. Yes, we are available and we are asked to provide input, but ये जो final number जो दिया जाता है वो project managers का काम नहीं होता है. In a typical organization, if you're in a very small organization where you have to deal with bringing the project, estimating it, costing it, budgeting it, and doing everything else, then the situation would be very different. But that is very, very rare in any organization. 3 formulas हो गए. अब बात करते हैं controlling cost की. So अब तक हमने क्या बात की है? जो 3 प्रोसेसेस हैं उसमें प्लानिंग में सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद हम उसको बजट बनाते हैं. बजट में वेरियस फैक्टर्स होते हैं. इन्फ्लेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, और उसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात की है. वो सारे जब हम अप्लाई करते हैं, मैनेजमेंट रिजर्व, कंस्ट्रेंट, कंटिंजेंसी रिजर्व और डिफरेंट टॉपिक्स को हम ऐड करके, डिफरेंट लाइन आइटम्स को ऐड अप करके एक नंबर लेके आ जाते हैं. और वो नंबर वो होता है जो हमारे और कस्टमर के बीच में कमिटेड कॉस्ट कंसिडर की जाती है. वंस वी हैव दैट कमिटेड कॉस्ट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स वी यूज दैट एज अ मेजरिंग टेप, measuring all our progress based on that number, whether we are ahead or whether we are behind. Are we over the budget or are we under the budget? Are we meeting the targets or we are not meeting the targets? So within the planning phase, you have planned out the estimate and now you have a budget. Now you move into execution. And while execution is going on, you are monitoring and controlling the cost that is being incurred during the execution phase. Control phase, जो control cost process है, वो like the word itself is done in the monitoring and control phase of the project. Controlling cost process is concerned with at least 3 things जो यहाँ पे listed हैं as part of your slide. Influencing the factors which create changes to the cost baseline to ensure that changes are beneficial and they have been agreed upon. Influencing the factors which create changes. हमने कोई cost baseline की है, उसमें changes आएंगे और आते हैं. How do we manage those changes? We also need to make sure कि जो changes आ रहे हैं, they are beneficial and agreed upon. Not because these are random cost changes. हमको पता नहीं है मगर अब 6 करोड़ के बजाय 7 करोड़ का प्रोजेक्ट हो चुका है. There is no word as हमको पता नहीं या हमको पता नहीं चला in a project manager's dictionary. You as a project manager will be responsible for understanding why certain things are happening, and you need to document those changes and you need to influence those factors, or at least keep your stakeholders informed of why certain numbers are changing. Number 2, also determining that the cost baseline has changed. Not only you will try to take care of the issues or the factors that may change the budget, but if there are changes, that means price difference, price बढ़ रही है. Now when you know that the price is increasing, you determine and you document that the cost baseline has changed. If there are informed changes, if there are changes in the cost of the project, it's because of certain situations or certain reasons. If you document those change and those are approved by your CCB board or the change control board, then
you add those as line items to your work activities and you re-baseline the project. That means at the start of the project we had to deliver 6 web pages, and now the customer has agreed to add 2 more web pages and the price has gone up 20%. When you've added 2 web pages, you add that line item and you re-baseline. Now your measuring tape or your yardstick was not what was agreed upon before, but it is now with the 20% increase. And from this point onward, because you have re-baselined the project, this will be the start of working your way up, and you will be measuring your activities against this new target. Third one is managing the actual changes when and as they occur. ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये हम changes की बातें कर रहे हैं. Changes होते हैं और changes होंगे. कोई ऐसा project नहीं है जिसमें changes नहीं है. But अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स रियलाइज कि जब चेंज होते हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है. डॉक्यूमेंट किया जाता है, उन हर चेंज के साथ कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है. अगर कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है तो इट्स अ ज़ीरो कॉस्ट लाइन आइटम. इफ इट इज़ गोइंग टू चेंज योर बजट, then you get that approved from the appropriate sponsors, and once you have the approval, you re-baseline the project and then you manage your actual change when and as they occur. जब वो change हो रही है, you making sure that जो आपने predict किया था, ये estimate किया था और budget किया था, now you are actually working in those boundaries. Earned value क्या होता है? Earned value का वर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है. Earned value analysis and the definitions of it. सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी है, वो है budgeted cost of work scheduled. It's called the BCWS. It's the planned value. Like the word itself explains it, the budgeted cost of work. The budgeted amount of cost for work scheduled to be accomplished in a given time period. हर लाइन एक्टिविटी की पे कुछ टाइम खर्च होना होता है और कुछ कॉस्ट इनकर होती है. सो फॉर दिस लाइन एक्टिविटी इट्स 20 लाख रुपए में ये लाइन एक्टिविटी होगी या 20,000 रुपए में होगी. ये हमने बजट किया हुआ है. 3 हफ्ते का काम 20,000 रुपए में अकम्प्लिश करेंगे. Actual cost of work performed. The amount reported as actually expended in completing the work accomplished within a given time period. पहले हमने कहा था 3 हफ्ते का काम 20,000 में. अब जब वो एक्चुअल वर्क हो चुका है, 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अब हमको पता चला कि वो 20,000 के बजाय काम तो हो गया टाइम पे, मगर वो 20,000 के बजाय अब वो 25,000 लग चुके हैं हमारे. All of a sudden you realize कि what you had committed with the customer, you're already over budget. 5,000 रुपए सिर्फ एक लाइन में आप already लॉस में जा रहे हैं. The amount reported is actually expended in completing the work accomplished within a given time period. And this time, the term given for this situation is the actual cost of work performed. फिर एक और term क्या है? Budgeted cost of work performed. And that is the earned value. It's called the BCWP. It's the budgeted amount of cost for completed work within a given time period. 20,000 रुपए की बात करते हैं तो that's the budgeted amount of cost for completed work within a given time period. Let me reiterate ये budgeted cost of work performed. जो BCWP है, थोड़ा सा confusion ना create हो जाए, मगर
वर्क स्केड्यूल्ड और वर्क परफॉर्म्ड में उसको हम लोग नीचे जाते हैं तो हम उसको कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन दोज टू नंबर्स. सो व्हाट इज द कॉस्ट CV, the cost variance is the BCWP minus the ACWP, the budgeted cost of work performed minus the actual cost of work performed. इसका जो difference है that's called the cost variance. और cost variance is the earned value, the actual cost minus the actual cost. What you need to understand is the negative variance indicates a cost overrun situation. 25,000 का काम हमने किया है, हमने बजट उस पे 20,000 का किया था. सो अगर नेगेटिव वेरिएंस आ गया है तो इट इंडिकेट्स अ कॉस्ट ओवररन सिचुएशन. व्हेन यू टॉक अबाउट द स्केड्यूल वेरिएंस, एक था CV और अब हम बात करेंगे SV की. SV is the BCWP minus the BCWS, or SV equals the EV minus the planned value. In this situation, the negative variance will indicate that you are behind schedule, or negative variance indicates a behind schedule situation. अब जरा सी important चीज, moving on, cost variances, schedule variances की बात हम कर रहे हैं. Cost variance percentage, CVP, is CV over the BCWP. Schedule variance percent, SV over the BCWS. Based on the cost variances, जो important चीज़ है is the CPI, the cost performance index. And then we talk about the schedule performance index. For the purpose of this class, for the purpose of advanced project management class, because I cannot spend a lot of written examples or case studies to explain clearly or the formulas, I'm hoping that we'll be able to deal with all of this in project constraint management class. Focus yourself, keep those formulas handy, but focus on this particular slide. Important thing to know is that schedule performance index and the cost performance schedule performance index and the cost performance index are important from reporting purposes. If you use Microsoft Project and your status report is giving these numbers as measuring yardstick for measuring your performance in your project, then from week to week you will be reporting on what your SPI or what your CPI is. So, if your performance index is 1.0, that means it's perfect performance. 1.0 means that you are meeting all the targets. Whatever was planned, in actuality you are actually performing at the same level. So it is perfect performance. Greater than 1.0 means it's exceptional performance. If it's 1.1, that means it's 10% better than what you had planned. People are working faster and they are consuming less resources. Working faster, SPI, using less resources, CPI. Greater than 1.0 is the exceptional performance. Less than 1.2 is poor performance. If you are at 0.8,
then the customer, when you provide the status report, can ask you a simple question. Why are you at point 8? And your reason could be that 2 of my resources fell sick. 2 weeks ago there was an unplanned holiday. Roads were blocked. We had to call off work. But everybody has agreed to put in more overtime in the upcoming week, and we will make up for the lost time. That ensures that the customer knows what he is asking about, and you know how to respond to that situation. Point 8 may or may not be acceptable. Next week comes along and you are at point 95, and your response will be that I, along with my team members, have worked the extra hours and have tried to catch up. We will continue to work at the same pace, so we try to meet the 1.0 target. 2-3 weeks later, when you come back, now you are at 1.05. Because of all the pace, because of the extra work, and the ability of your team to catch up and do better, now you're not only meeting the target of 1.0, but now you're at a 1.05, which means that your efficiency rate is better than what was planned. Couple more definitions. Estimate at completion. The budget at completion. The planned cost for the entire project. The estimate at completion. So the budget at completion is the total amount of money or budgeted cost or the planned cost for the entire project, and now we are looking at estimate at completion. The current estimated cost for the entire project based on current performance. So what would be the estimate at completion? If you're continuously lagging behind, then obviously your EAC or the estimate at completion will be higher than what you had budgeted. But initially you were lagging, but 2-3 months have passed and now you are at a faster pace. Your estimate at completion now is actually becoming less than the budget at completion for the entire project. Now you are working at a superior, great performance. Too many formulas, too many terminologies. For the purpose of this class or for the purpose of this course, I would like you to only focus on SPIs, the CPI, and the performance index. Understand the variances greater than, less than, equal to. What does 1.0, what does that mean? If you get a case study or a scenario in the same scenario that I have explained about lagging behind, trying to keep up, meeting the target, and then improving your pace to actually get up to an exceptional performance, what would that mean to you and your project team and your status reporting as far as earned value is concerned? These are the important topics. Do not worry about a lot of these formulas, because again, like I said, we will focus on all of these in the project constraint management class, which is another elective for PRN within the MSPM group of electives for project management classes. With all this, happy reading, good luck to you, and Allah Hafiz. I will see you again, inshallah, next week with another knowledge area, and I'm hoping it will be the project time management. Allah Hafiz, good luck to all of you.